Assalamu alaikum, my dear students. This is the first chapter of your English book, and it's a poem, Ballpoint Penguins. So, dear students, in the previous video lecture, we talked about the introduction of this poem, okay? And in the previous video lecture, I told you that the Ballpoint Penguins, this is a poem, and it's written by a poet named Jack Pulaski, who is from United States of America. I told you that he used to write poetry for children, and for that purpose, he was given a name, Children's Poet Laureate. I told you in the previous video lecture that the poem Ballpoint Penguins is about unique creatures, is about a flightless birds called penguins who are black and white in color. And these penguins are mostly, and I mean, these penguins are mostly found in very cold parts of the world where there is little sunshine. Okay, so this was the introduction of this poem that we discussed earlier in the previous video lecture. Okay, so in this video lecture today, we will read this poem and we'll try to understand each and everything included here in the poem. Okay, so let's get started. So, my dear students, the first stanza of the poem, stanza, I told you earlier that the stanza is a group of lines in a poem. यहाँ पर चार lines है ना एक साथ, so this is called as stanza. So, let's read the first stanza of this poem, okay? The ballpoint penguins, black and white, do little else but write and write. Although they have nothing much to say, they write and write it anyway. So, my dear students, in the first stanza, the poet refers penguins as black and white creatures and says that the penguins have nothing much to do and say, but they just keep on writing as writing is the only activity for penguins through which they express themselves. तो जो राइटर है ना, जो पोएट है इस पोएम का, वो क्या बोलता है कि जो बाल पॉइंट पेंगुइन्स है वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, कि ये तो आपको पता ही है दैट दिस पेंगुइन्स आर अ काइंड ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. ये ऐसे बर्ड्स है जो उड़ नहीं सकते, ठीक है. तो दीज आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर. तो ये बोलता है कि ये तो ब्लैक एंड कलर, ये ब्लैक एंड वाइट कलर के बर्ड्स हैं. तो वो ये भी बोलता है कि मतलब इनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं होता, बट वो एक ही चीज़ करते हैं. मतलब अगर उनको कुछ बोलना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो राइटिंग के थ्रू अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. जो भी उनको बोलना होता है वो बस लिखते ही लिखते रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब जिसके थ्रू वो अपने फीलिंग्स या उनको जो भी बोलना होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंस ऑफ द पोएम. जिस have a look at the second stanza of this poem. The ballpoint penguins do not think, they simply write with endless ink. They write of ice, they write of snow, for that's all they seem to know. So, in the second stanza, the poet says that the ballpoint penguins do not think, okay, but he further refers to the point that the fun activity for the ballpoint penguins is writing. So they just keep on writing with the endless ink. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पोइट क्या बोलता है कि जो ballpoint penguins होते हैं उनके मतलब वो ज़्यादा वो सोचते नहीं है, बट वो हमें इस बात के बारे में यहाँ पर बोलता है कि जो बाल पॉइंट पेंगुइन्स है ना, उनके पास बस एक ही काम है, वो ये है कि वो सिर्फ लिखते ही लिखते रहते हैं. ओके, द पोइट ही सेज दैट द बाल पॉइंट पेंगुइन्स राइट अबाउट द आइस एंड दे ऑल्सो राइट अबाउट द स्नो. Because this is the only thing the ballpoint penguins seem to be aware about. तो पोइट हमें यहाँ पर ये भी बोलता है, एक तो वो बोलता है कि वो थिंक मतलब सोचते नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो लिखते ही लिखते रहते हैं एंडलेस इंक से. एंडलेस इंक इन द सेंस कि कभी ना ख़त्म होने वाली इंक, मतलब वो अपनी बीक का यूज़ करके लिखते हैं ना. तो वो यहाँ पर ये बोलता है पोइट कि जो बाल पॉइंट पेंगुइन्स है वो आइस और स्नो के बारे में लिखते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट वो क्यों लिखते हैं आइस और स्नो के बारे में, इसलिए बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दीज पेंगुइन्स आर फाउंड वेरी कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत ही कम मतलब सनशाइन होती है, ठीक है. तो वो इसीलिए आइस और स्नो के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बस वही चीज़ें देखते हैं, आइस देखते हैं, तो उनको बस उन्हीं चीज़ों के बारे में पता है. सो दैट्स द रीज़न वाई दे राइट ऑफ आइस एंड स्नो. ओके, now let's read the third stanza of the poem. At times, these shy and silent birds will verbally express their words, but mostly they do not recite, they aim their beaks and write and write.
So, dear kids, in the last stanza, the poet wants to say that the penguins are shy creatures and they rarely express their feelings vocally through words. Okay, I mean, they do not say or sing anything, but they express themselves by aiming their beaks like a pen and start writing whatever they want to write. तो यहाँ पर क्या बोलता है जो पोइट है, वो बोलता है कि जो पेंगुइन्स है वो शर्मिले टाइप के बर्ड्स हैं, वो खामोश ही रहते हैं ज़्यादातर, तो कभी कभार वो मतलब बोल के कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, उनको जो भी बोलना होता है ना, वो ऐसे बोलते नहीं। जब हमें कुछ बोलना होता है तो हम सीधे बात करते हैं, बट पेंगुइन्स का क्या है, दे कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, वो बात नहीं कर सकते, बट कभी कभार वो वोकली मतलब वर्ड्स के थ्रू वर्बली वो कुछ वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं, बट मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो बस अपनी बीक का यूज़ करके, बस उनको जो भी एक्सप्रेस करना होता है, जो भी बोलना होता है, वो बस बीक का यूज़ करके वो लिखते हैं, ठीक है, लिख के एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. Yeah, let's revise it quickly once again. So, in the first stanza, the poet refers penguins as black and white creatures and says that the penguins have nothing much to say or nothing much to do, but they just keep on writing क्योंकि writing जो है ना वो खाली एक चीज़ ऐसी है जो वो कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अपने फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. इन द सेकेंड स्टंजा जो पोइट है ना, द पोइट सेज दैट द बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू नॉट थिंक बट वो हमें ये बोलता है कि बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू ओनली वन थिंग एंड दे जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड राइटिंग द ओनली वे थ्रू विच दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. एंड he further says in this stanza that the ballpoint penguins write only about the ice and snow because this is the only thing the ballpoint penguins are aware about. ठीक है, मतलब उनको खाली स्नो और आइस के बारे में, क्योंकि दीज आर फाउंड द कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर बस बर्फ़ और स्नो होती है ना, तो खाली वो चीज़ें जो है उनके बारे में पेंगुइन्स जानते हैं, तो दिस द रीज़न वाई दे राइट ऑफ आइस एंड स्नो. सो इन द लास्ट स्टेंजा पोइट क्या बोलता है कि द पेंगुइन्स आर शाई क्रिएचर्स एंड दे रेयरली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स वोकली. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय एमिंग देयर बीक्स लाइक ए पेन, और उनको जो भी बोलना होता है वो तो ऐसे ज़्यादा मतलब बोलते नहीं, कभी कभार वो वर्ड्स के थ्रू कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं कि वो अपनी बीक का यूज़ करके दे स्टार्ट राइटिंग एंड दे जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड they express their feelings through writing, or they express themselves whatever they want to say by making use of their beak. So this is the explanation of this poem. Thank you so much.